I got a really one interesting question for you. So look at the question. Look at the question. This is so beautiful, beautifully articulated question. देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है. The number of AP with 5 distinct terms can be formed from the first 50 natural number is equal to. कितने APs फाइंड कर सकते हैं? The number of APs. How many APs can be formed? How many APs can be formed if you pick up the five terms, any 5 terms between 1 to 50. कोई भी 5 terms ले लो, but those 5 terms has to be in AP. ऐसे कितने AP बन सकते हैं? That's the question. The number of APs with 5 distinct terms can be formed from the first 50 natural number is how many? Yeah, so how many APs? Keep in mind, how many APs can be formed? That's the question. Now, try karo. Tell me, and then also tell me what is the level of difficulty you feel about this question. Simple सा question है. Simple सा question मतलब कि simple to understand है, right? That you need 5 terms which are in AP, and the number has to be between 1 to 50. From 1 to 50, any number, any 5 numbers. Yeah. Okay. Now, first of all, as we say they are in AP, that means what comes in your mind? How do you identify the numbers are in AP? Common difference? Yes. So we need to look at the common difference. अब common difference तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे. So we can only assume the common difference here. Yeah? चलो assume करते. What if the common difference is 1? तो क्या होगा? सोचो. Common difference 1 है तो क्या होगा? इसका मतलब you can have any number from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to say 45, 46, 47, 48, 49 and 50. देखो ध्यान से देखना, don't skip any part of this video. अब 5 टर्म चाहिए विच आर इन AP. कॉमन डिफरेंस 1 के साथ you can take any other value also as common difference, but let's go with a sequential approach. पहले कॉमन डिफरेंस 1 देखते हैं, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 and then it will go on. Yeah. So common difference 1 के साथ first AP which I can form is 1 to 5. 5 distinct numbers and they are in AP. The second one I can find from 2 to 6. Second one starting from 2 to 6. The third one I can form from 3 to 7. The fourth one I can form from 4 to 8. Fourth AP, as I'm going in the sequential approach, fourth AP is starting with 4. Fifth AP is going to start with 5. अच्छा, last AP क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में चलो. लास्ट एपी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब 46 से लेके 50 तक. दिस इज योर लास्ट एपी, राइट? है ना? सो हाउ मेनी एपीज आर पॉसिबल विद द कॉमन डिफरेंस 1? With the common difference 1. That's not the answer. We need to find total number of APs can be formed. So with the common difference 1, there are 46 APs can be formed. Yes? With common difference 1. Do you agree? इस चीज को थोड़ा और ठीक से ऑब्जर्व करो. देखो, टोटल 50 टर्म्स थे. I mean with common difference 1 I can take 50 terms. Yeah, there are 50 terms in the sequence with common difference 1. उसमें से the APs, the 5 terms AP I can make only 46. 46. Yeah, ध्यान रहेगा 46. Because last के जो चार्ट, you can't start the 5 terms AP with 47 because 47 से start किया तो 4 ही terms है. You can't start the 5 terms AP with 48 because 48 से start किया तो 3 ही terms है. And same goes for 49 and 50. मतलब लास्ट के 4 टर्म्स जो हैं, लास्ट के 4 नंबर्स जो हैं, दे कैन नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर AP. डू यू अग्री?
लास्ट के 4 टर्म्स के नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, ये बहुत जनरल सी बात है, इसमें कोई फॉर्मूला वाली बात नहीं। अग्री? 47 से नहीं 40, ये बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। देखो कैसे, आई टेल यू व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेट्स से, let's start making the series with d equal to 2. Common difference is 2. अब common difference 2 के साथ I can either start the series with 1 and I can go as 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. You can see all odd numbers, so it should end with what? 49. My first question to you, 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 49 है। How many numbers are there? इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं? There are 25 नंबर्स, क्योंकि ऑड नंबर्स है ना यार। 50 में से आधे ऑड और आधे इवन, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, राइट? हाफ इवन हाफ ऑड, सो 50 by 2 is what? 25. So there are 25 numbers here, right? Now with these 25 numbers, if I take common difference to be 2, how many APs I can form? Now here I will use this information, the previous information which I said, last के 4 terms कोई काम के नहीं है. The last 4 terms are of no use because you can't start with them and make a 5 terms AP. Are you understanding? 5 terms AP. देखो क्वेश्चन में बोला है AP with 5 distinct terms. So 5 terms AP नहीं बना सकते ना, लास्ट 4 के नंबर्स को लेके स्टार्ट करके, उनसे स्टार्ट करके, राइट? सो वो माइनस किया तो कितना बचा? 21. तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? विद दिस ऑड टर्म्स विच आर गिवन देयर, आई कैन मेक 21 APs. Same I can do with the even numbers also, with a common difference 2. Same, I can start with 2 also, right? 2, 4, 6, 8, 10, 12. You'll go up till 50. And we know there are how many numbers will be there? 25 numbers, 25 even numbers, right? Between from 1 to 50. Now out of 25, again last 4 terms cannot be the starting point for AP having 5 terms. Last 4 numbers cannot be a starting point of AP having 5 terms. Think about it. वहाँ से स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल दिया था यार, आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने, रिमेंबर? ओके, सो अगेन दोज 5, 4 आर ऑफ नो यूज. सो कितना बचा? 21. अच्छा, अब 21 + 21 विथ कॉमन डिफरेंस 2. हाउ मेनी APs आर पॉसिबल? 21 विथ ऑड एंड 21 विथ इवन. सो हाउ मेनी APs आर पॉसिबल विथ कॉमन डिफरेंस 2? 42. इसको भी याद रखना. With common difference 2, there are 42 APs possible. With common difference 1, there are 46 APs possible. ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो आगे देखो. If I say the common difference 3. अच्छा, do you agree यहाँ पे हमने common difference 2 के साथ सारे APs काउंट कर लिए? Do you agree with that? देखो यार, समझो उसको. क्या हमने 1 से स्टार्ट करके कॉमन डिफरेंस 2 और 1 से स्टार्ट करके AP काउंट किया है? क्या किया है? यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 5. क्या हमने 2 से स्टार्ट करके किया है? क्या किया है? जब हमने इवन टर्म्स लिए थे, इवन नंबर्स लिए थे, 2, 4, 6, 8, 10. क्या हमने 3 से स्टार्ट करके लिया जब हमने ऑड लिया था? 3, 5, 7, 9, 11. क्या 4 से स्टार्ट करके? हियर इन इवन नंबर 4, 6, 8, 10, 12. Yeah, this is the example, and you can go further and see that we have taken all the possible number with which an AP can start, right? With which an AP can start having 5 terms, 5 terms in that AP. Do you agree? Yes? नहीं तो इस पार्ट को फिर से रिवाइज करो, रिपीट करो, रिवाइंड करो एंड देन चेक इट अगेन. ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस 3. ये थोड़ा इजी नहीं होगा, इसको ध्यान से देखना. इफ आई स्टार्ट विथ 1, आई हैव 1. कॉमन डिफरेंस 3, 4, 7 + 3, 10 + 3, 13 + 3,
16 प्लस 3 19, इट विल गो ऑन। पहला सवाल तो ये है कि इट विल एंड विथ विच टर्म, इट विल एंड विथ विच नंबर। ये जो सीरीज है ये किस नंबर पे एंड करेगा, ये आप बताओ। कैसे बताएंगे? ये पिछले पार्ट में व्हेन वी हैड t इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस 2 के साथ क्या इवन और ऑड बन सकता है, सिंपल है। बट व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 3, इट इज नॉट अबाउट इवन एंड ऑड। तो हम लोग इजीली नहीं बता सकते कि इट विल एंड विथ विच नंबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम लोग बोलेंगे ये भी तो एपी में है ना, we'll say this is also an AP, and we can say that okay, the last number, I don't know what, but that's going to be a plus n, I don't know n also। अच्छा, by the way I know a क्या है 1। मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 5 टर्म्स वाले AP की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सीरीज की बात कर रहा हूँ। 1 n minus 1 number of terms, I don't know that, number of values, I don't know that, common difference is what 3। अब ये जो ए एन लास्ट टर्म जो है दिस इज वॉट एवर इट इज, बट इट हैज टू बी लेस देन 50, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 3n माइनस 3, मतलब ये क्या होगा 3n माइनस 2। मतलब यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म दैट हैज टू बी 2 लेस देन, ये वाले इसमें 2 लेस देन a multiple of 3, a multiple of 3। तो 2 less than multiple of 3 and that has to be less than 50। तो एक क्लोजेस्ट नंबर जो 3 का मल्टीपल है और क्लोजेस्ट ऑफ 50 है, यू नो व्हाट, दैट इज 51। उससे -2 लिया, 51 is not in that numbers between 1 to 50, please don't confuse yourself। 51 is a number which is multiple of 3, और उसमें से -2 करेंगे तो 51 minus 2 कितना होगा बताओ 49। या कैन आई से दिस विल गो अप टिल 49? थिंक अबाउट इट। और एक तरीका है इसको समझने का, समझो, दिस इज 1 0 प्लस 1, दिस इज 4 3 प्लस 1, दिस इज 7 6 प्लस 1, मतलब एक मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज़्यादा है। हाँ, लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 जो है, जो 50 के अंदर है, वो 48 है। तो 48 से एक ज़्यादा फिर क्या होगा 49। विद दिस अप्रोच ऑल्सो यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन दैट द लास्ट नंबर विल बी 49। वेल, ये इतना काफ़ी नहीं है। जब हमें 49 मिला एज अ लास्ट टर्म, आवर फोकस हैज टू बी ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ न्यूमरल्स दे। सो n इक्वल टू कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो, 2 इधर लिया तो कितना होगा 51, डिवाइड बाय 3 इधर लिया तो कितना हो जाएगा 17। सो क्वेश्चन नाउ हियर, व्हाट इज दिस 17? दिस 17 इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस सीरीज, 1 4 7 10 13 16 19 अप टू 49। इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं? तो इस सीरीज में 17 नंबर्स हैं। नाउ इफ आई ट्राई टू फॉर्म APs with 5 टर्म्स, तो मैं फिर से क्या सेम अप्रोच लगा सकता हूँ कि आउट ऑफ दिस 17 आई कैन स्टार्ट द AP विथ 5 टर्म्स फ्रॉम एनी नंबर एक्सेप्ट द लास्ट 4। एक्सेप्ट द लास्ट 4, देखो यहाँ पे भी हमने वही अप्रोच लगाया था, एक्सेप्ट द लास्ट 4। एंड यू नो द रीजन वाई, बिकॉज इफ यू स्टार्ट विद देम यू विल नॉट हैव 5 टर्म्स नेक्स्ट टू देम, राइट? including them, you will not have 5 terms consecutive। so ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया 17 minus 4 is what 13, right? ये हमने कॉमन डिफरेंस 3 लिया और 1 4 यहाँ से स्टार्ट किया। नाउ लेट्स टेक कॉमन डिफरेंस 3, बट दिस टाइम लेट्स स्टार्ट विथ 2। so if I have 2, the next number will be 7, next is sorry not 7, कॉमन डिफरेंस 3 है ना। सो 2 5 8 11 14 and then 17 and it will go on like this again। I don't know it will end with what। यार थोड़ा हम लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं, मुझे लगता है एक नंबर आगे अगर हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो देन इट शुड एंड विथ 50, isn't it? पिछला वाला अगर 49 से एंड किया है व्हेन वी स्टार्टेड विद 1,
सो ये वाला एंड होना चाहिए 50 से, राइट. अगेन इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस टर्म, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस टर्म, सो क्या करेंगे उसके लिए? You can simply do what? The last term is 50, where the first term is 2, and number of terms I need to find out, and common difference is 3. So again you can say what? That is 2 plus 3n minus 3, which is going to get you minus 1. So 3n minus 1 is 50. Now 1 if I take to the other side, this is going to get me 3n equal to 51 and n equal to again 17. So here I come to a conclusion that again in this series there are 17 terms. So 17 terms hai, and then now again I need to form AP with 5 terms. So इसका मतलब फिर से last के 4 terms will be of no use. So 17 minus 4 is again going to be 13. Okay, now this part will be interesting. अभी ध्यान से देखो. We are not done yet. आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा. मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा. देखो ये सब जब when you are thorough with arithmetic progression and its formula, या जब ये कंटेस्ट हो जाएंगे तो ये सब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, एंड फॉर दिस आपको मिनिमम कम से कम एक 20-25 और एटलीस्ट 30 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. वेराइटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड एनी बुक, बिकॉज बुक में आपको एक सीरीज दिखेगा, एक जैसे एक फॉर्मूला और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस. वेराइटीज करो. I was just reading one article a day before, and it was about healthy diet. So they have emphasized a lot on variety of food. Variety of food आपको खाना चाहिए. Yeah, instead of having monotonous food, that will help you. That will get you more nutritions. Yeah. Similarly, यहाँ पे भी अगर practice करना है तो varieties of question try करो. Yeah. Okay, we are not done yet. So starting with 1 हो गया, starting with 2 हो गया. Now let's start with 3. So if I have a series starting with 3, so it will be 3, 6, then 9, then 12, then 18. Oh, this is all table of 3 है, multiple of 3. So last term क्या होगा? अब यहाँ 1 से start किया तो 49, 2 से start किया तो 50, 3 से start किया तो it should be 51, but we can't go up till 51 because we need to take natural number from 1 to 50, right? So I need to go one step before. So and also I need to see it has to be multiple of 3. So last multiple of 3 we have discussed previously that last multiple of 3 in this series is 48, right? So how many numbers are there? Again, if 48 is the last term, how many numbers will be there? Starting with 3, and number of terms I need to find out with common difference 3. So if you simplify this, you get n equal to what? 3 here, and then divide by 3. So 45 by 15, 16. So you don't get 17, you get 16 this time. That's the beauty of this question. Yeah. Now if n is equal to 16, that means you will have 16 numbers here. Again, form APs with 5 terms. उसके लिए कितने वैल्यूज चाहिए होंगे बताओ? Again, last 4 term will be of no use, right? So this is going to be what? 16 minus 4, because you can't start with last 4 term 4 numbers anyways. तो कितना हो जाएगा? 12. Okay. Now if you see the total APs which are possible with common difference is 3. देखो यार, हमने यहाँ पे सब कुछ we have counted all the possible APs with common difference 3. I'll tell you how. See, if the AP has to start with 1, counted here. If AP has to start with 2, counted here. AP has to start with 3, counted here. AP has to start with 4, 3 के बाद 4, counted here. AP has to start with 5, counted here. AP has to start with 6, counted here. Yeah, and so that so on. Yeah, so we counted all the possible APs with common difference 3. Now if you add all the possible APs with common difference 3, here you have 12, here you got 13, and then here again you got
13. So 13, 13, 26. 26 plus 12 is 38. Yeah. So how many APs are possible with common difference 3? With common difference 3, how many APs are possible? 38. Now, kahani mein twist. One more beautiful turn in this question. Now look at that. When you have common difference 1, there are 46 APs. When you have common difference 2, 42 APs. When you have common difference 3, you got 38 APs. Let me write this all in here. Common difference 1, you got 46 APs. Common difference 2, you got 42 APs. Common difference 3, you got 38 APs. Do you find something common in them? यहाँ भी difference 4 है. So that means if you have common difference 4, the number of APs possible is again -4. So that's going to be 34. And ये सिलसिला चलता रहेगा. Yeah. So again, so this is if you add all of them. So total number of APs possible should be equal to 46 plus 42 plus 38 plus 34, and it goes on. It will end with what? You don't know. Well, अगर जानना चाहते हो तो ऐसा देख सकते हो. देखो इनमें कुछ कॉमन चीज देखो. Difference is 4. Yeah, this is a 2 less than multiple of 4. 48 minus 2. This is 2 less than multiple of 4. 44 minus 2. This is 2 less than multiple of 4. That is 40 minus 2. Are you getting it? This will be 36 minus 2. So the last term, which will be 2 less than multiple of 4, it will be 4 minus 2. So 4 minus 2 is what? 2. So it should go up to 2. Don't you think so? That's common between them. Yeah. अगर ये identify नहीं कर पा रहे हो, so no problem. Again, you can apply the same approach which we have applied in the same question, which is what? I don't know the last term here, but I know the first term, which is 46. Number of terms I don't know again, and common difference is what? -4 here. So if you simplify this, you will get what? 46 plus, no, minus 4n plus 4. 46 plus 4 is going to be what? 50 minus 4n. Yeah, that is going to be your last nth term. Now here, this maximum value which n can take, is what? 12. 12 fours are 48, isn't it? So maximum value which n can take here is what? 12. If you go more than that, 13, then it's going to be 13 fours are 52, and 52 will be more than 50. तो आपका value क्या हो जाएगा? Negative. No, we are talking about natural numbers, can't be negative. So maximum value which n can take is 12, right? And when you substitute n equal to 12 here, you will get the last term as what? N equal to 12. 4 12s are 48. Difference is what? 2. Again you got 2. The last term has to be 2, right? Well, the benefit here is we also got the value of n. In such case, the value of n is equal to what? Value of n equal to what? 12. That means how many terms are possible in this series? There are 12 terms possible in this series. What do we need to find out? How many total number of APs possible? To find the total number of APs, I need to add these all values. ये values भी AP में हैं. These values are also in AP. So उसके लिए फिर से sum of AP लगाओ. So sum of AP लगाओ. Sum of AP is what? Here, sum of AP will be what? N by 2. And now because I know the last term, I will say first term plus last term. Yeah, n by 2. What is the value of n here? 12 by 2. First term is what? First term here we got 46, and the last term here we got what? 2. So if you simplify this further, you have here 6, and this is what? 6 into 48. Now if you simplify 6 into 48, what you get is 288.
That means sum of this series, which series? The total number of APs possible is equal to this, and this sum is equal to 288. So sum of the total number of APs possible is equal to what? 288. Yes, that's your answer, guys. That is your answer. I hope you got the same answer. Chalo, 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 option pe. Yeah, so I told you at the beginning, this is very interesting question. So answer is 288. I will be happy to see in case if you have used some different approach, I'll be happy to see your approach also. Please write in the comment box. What do you think about the level of difficulty? Level of difficulty is definitely not 0. Do you want to mark 0? Do you want to mark level of difficulty to be easy? It's definitely not easy. Definitely not medium. I should mark it hard. इसको हार्ड लेवल बोलते हैं एग्जाम में. या इतना ही हार्ड आता है, इससे ज़्यादा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. You can see maths is minimum, reasoning is a lot. Basic maths and lot of reasoning is equal to quantitative aptitude. So I hope you like this question and explanation also. Level of difficulty, I feel it should be hard. Let's solve the next question.